हेलो एवरीवन। देन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टोमक के विस्टर रिलेशन तक बात किया था और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टोमक के बारे में। तो स्टोमक का ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है? तो स्टोमक का ब्लड सप्लाई मेनली होता है सीलिएक ट्रंक से। और सीलिएक ट्रंक कहाँ से ओरिजिनेट करता है? तो सीलिएक ट्रंक ओरिजिनेट करता है वेंट्रल पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा से एट T12 लेवल। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको ब्लड सप्लाई होता है। ये मान लेते ये वाला हमारा स्टोमक हो गया और ये वाला हमारा सीलिएक ट्रंक हो गया। इससे एक ब्रांच सबसे पहले निकलता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, फिर एक ब्रांच निकले यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी कि स्प्लीन को सप्लाई करता है। इसके बाद निकलता है एक ब्रांच लास्ट कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो कि आगे चल के एक ब्रांच देता है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ब्रांच देने के बाद कॉमन हेपेटिक आर्टरी कन्वर्ट इनटू प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। देन प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी तीन ब्रांच होता है, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी एंड देन राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये तीन ब्रांच दिया। फिर स्प्लीनिक आर्टरी आगे स्प्लीन को सप्लाई देने के बाद ये दो ब्रांच देता है। एक ब्रांच देता है 5 से शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, देन एक ब्रांच देता है लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। देन गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आगे चल के वापस से दो ब्रांच देती है राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, देन एक ब्रांच देती है सुपीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी। आइए अब इन सबकी हम नेमिंग देख लेते हैं। ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाला हमारा हो गया सीलिएक ट्रंक, देन ये वाला हमारा हो गया स्प्लीनिक आर्टरी, ये वाला हमारा हो गया 5 से 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हमारा स्प्लीन हो गया और ये वाला हमारा हो गया लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, ये वाला हमारा कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये वाला हमारा हो गया गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। After giving gastrodduodenal artery, it converts common hepatic artery converts into proper hepatic artery, and then proper hepatic artery gives 3 branches. One is left and right hepatic artery, then हो गया then right gastric artery. Then gastrodduodenal artery gives 2 branches. One is right gastroepiploic artery and other is superior pancreatic or duodenal artery. Then at the lesser curvature of the stomach supplied by the anastomosis of left and right gastric artery. Also at greater curvature of the stomach is supplied by the anastomosis of left and right gastroepiploic artery. Fundus of the stomach is supplied by the 5 to 7 short gastric artery. This is the arterial supply of the stomach. This is the arterial supply of the stomach. Now we deal about the venous drainage of the stomach. There are the three veins taking participate in the venous drainage of the stomach. They are the portal vein, superior mesenteric vein and the splenic vein. From right and left gastric veins, right and left gastric vein drain into portal vein,
and right gastroepiploic vein drain into superior mesenteric vein and 5 to 7 short gastric vein and left gastroepiploic vein drain into short gastric vein and left gastric vein drain into splenic vein. Just see. Right and left gastric vein drain into portal vein, then right gastroepiploic vein drain into superior mesenteric vein, and then short gastric vein or left gastroepiploic vein drain into splenic vein. Now we deal about the lymphatic drainage of the stomach. Lymphatic drainage. The lymphatic drainage of the stomach. Lymphatic drainage. The stomach is divided into 4 territories or 4 areas where lymph is collected. These 4 areas are first area, second area, third area, and fourth area. Lymph reception. From the left upper one third, lymphatics drain into pancreatico-splenic nodes. Pancreatico-splenic nodes, and from the pancreatico-splenic nodes, it drain into the celiac nodes. And then from the right upper two third, lymphatics drain into gastric nodes, and from the gastric nodes it further drain into celiac nodes. Then from the left lower two third area drain into right gastroepiploic nodes, which further drain into subpyloric nodes, which further drain into hepatic nodes, and then hepatic nodes further drain into celiac nodes. Now deal about left lower pyloric area. In the pyloric area, lymph drain, some lymphatics drain into subpyloric nodes, some drain into gastric nodes, some drain into hepatic nodes, and some directly drain into celiac nodes. And from the celiac nodes, it passes through the intestinal lymph trunk to reach the cisterna chyli. आइए अब हम सबकी नेमिंग्स कर लेते हैं। ये वाला फर्स्ट एरिया ये कहाँ पे ट्रेन करता है? ये ट्रेन करता है पैंक्रियाटिक को स्प्लेनिक नोड्स में। देन ये वाला सेकेंड एरिया है तो ये ट्रेन करता है गैस्ट्रिक नोड्स में। फिर ये थर्ड एरिया ये पहले ट्रेन करता है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड्स में। देन उसके बाद ये ट्रेन करता है फोर्थ एरिया ये राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, फिर इसके बाद सबपाइलोरिक नोड्स, देन सबपाइलोरिक नोड्स ट्रेन इनटू हेपेटिक नोड्स, देन हेपेटिक नोड्स ट्रेन इनटू celiac nodes. तो ये रहा हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। अब हम डील करते हैं
nerve supply of the stomach. तो सबसे पहले स्टमक का नर्व सप्लाई होता है। तो स्टमक रिसीव करता है बोथ नर्व सप्लाई, बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक इसे मिलता है T6 से T10 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और पैरासिम्पैथेटिक राइट और लेफ्ट वेगस नर्व और sympathetic, and from the sympathetic innervation it reaches the stomach by greater splanchnic nerve, hepatic and celiac plexus. It reaches to stomach, and then sympathetic innervation is motor to the pyloric sphincter and inhibited to the rest of the stomach. Parasympathetic nerves is responsible for the secretion of the stomach. Then we deal about the interior of the stomach. In the interior of the stomach is the mucosal fold of the mucosa of an empty stomach. It's thrown into so many folds that is known as gastric ruggy, and also a canal is located near the lesser curvature of the stomach. Now we deal about the applied anatomy of the stomach. From the applied anatomy, first we deal about the gastric ulcer. It is most common along lesser curvature. Of stomach. Why this is? So this is because of there is very thin epithelial lining on the lesser curvature. Also there is a very less blood supply and while very rich nerve supply. Then there is location of gastric canal is found near lesser curvature. So if we take intake of drink any liquid, then it come into the come into the gastric canal. आइए इसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है gastric ulcer due to thin epithelial lining. Then यहाँ पे less abundant blood supply, rich nerve supply, and also there is due to of Helicobacter pylori bacteria, and also there is due to the presence of gastric canal. Now we deal about the gastric carcinoma. So it is common along greater curvature of the stomach. And gastric carcinoma has a tendency to spread in other organ that is known as the metastasis by the help of the thoracic duct to left supraclavicular lymph node, and also in this, and there is the enlargement of the left supraclavicular nodes, which is known as the Traubger sign. And the left supraclavicular lymph node is also known as Virchow's nodes. Now we deal about the gastric pain. If there is a complete obstruction of the esophagus, then food is put into the gastric triangle,
and for food is put into the gas place. Just look at this is 20. This is the anterior abdomen. This is the left or right costal margin. Also, this is the transverse colon. Then this space is the gastric triangle. This space is known as gastric triangle. Its left border is right border is made by inferior border of liver. Left border is made by left costal margin, and inferior boundary is made by inferior border by transverse colon. If there is the complete obstruction, then food is directly put into the gastric triangle. So स्टमक के बारे में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.